Hi there, how are you doing? I'm doing fine, hope you're doing good. बहुत साल पहले हम मदर्स ने ये डिसाइड किया कि चलो एक अपने लिए एक फ्री दिन लेते हैं और बच्चों के लिए पिज्जाज ऑर्डर करते हैं. दैट डे वाज मेनली फॉर अस, नॉट फॉर किड्स, बिकॉज मम्मीज को टाइम नहीं मिलता था अपने लिए. सो वी जस्ट decided to get together at one of our friends' place and we ordered some pizzas for the kids. You know how kids love pizzas. Kids were waiting excitedly for the pizza man to enter the door, and as the bell rang, they ran towards the door. You know how we are all with pizzas. Even at this age, I don't mind a piece of pizza. So kids ran towards the door, and I was sitting and intently watching as the pizzas were being served to the kids on the plate. The kids were very smartly waiting for the pizza to be served and looking at which size is bigger, whether he's got it bigger than me or not. And the next thing, what I noticed was that the kids were eating only the center portion of the pizza and discarding the outer hard crust on the side. बच्चे खाली वही वाला पोर्शन खा रहे थे जो उनको पसंद था और बाकी साइड का हार्ड वाला ब्रेड वो पोर्शन साइड में रख के दूसरा पीस ले रहे थे. ये एग्जाम्पल मेरे कहीं जहन में रह गया. And whenever I used to go for my training sessions, I used to always give this example in my training scenarios to all the people who would come to get trained under me. आप सबके बीच में ऐसे आदमी जरूर होंगे, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके बॉस, आपके कोलीग्स, आपकी फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स. आई थिंक हम सबके बीच में ऐसा कोई ना कोई आदमी जरूर होता है जो हमेशा कंप्लेन करता रहता है और कंप्लेन करना उनकी फितरत बन जाती है, उनकी आदत बन जाती है ना? मैं तो अक्सर ऐसे आदमियों से मिलती हूँ जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं. अगर आपकी कंप्लेन करने की आदत है तो ये टिप आपके लिए है, ये लाइफ सेविंग टिप आपके लिए है. जब आप कंप्लेन करते हैं तो आप दिन की शुरुआत ही एक नेगेटिव नोट पे कर लेते हैं और आपका सारा दिन वैसे ही बीतता है. क्या हम बच्चों के जैसे नहीं हो सकते? कितने स्मार्ट हैं बच्चे अपनी लाइफ सेविंग स्किल्स में. Can't we be smart like kids on our life saving skills and life strategies by picking up only those things which we like and savor and discard all the other things which are not good for us? Just like the center portion of the pizza, which is taken and savored by the kids, and the outer hard crust, which is discarded by the kids. This is a tip for all those people who complain a lot. Stop complaining and concentrate only on the softer portion of the pizza, just like our children. For more such videos, let's tune in for this channel, and bye-bye to you and see you soon. Lots of love, Sapna Handa.